am Dr. Anita Rathore, working as Assistant Professor in Biyani Girls College. Today, I am going to continue my last lecture, that is communication. In my last lecture, I have already discussed what is communication, and I have also described about the process of communication. In today's lecture, I will continue that, and now we will move towards the types of communication. Basically, there are two types of communication. First is verbal communication and the second one is non-verbal communication. What is verbal communication? Verbal communication is means by when we start communicating or sharing our information by speaking, by using some words, by using sub alphabets, or by using when we speak and we communicate to the next person, that is verbal communication. And non-verbal communication, non-verbal communication are those communication in which the signs, pictures, signatures or any other body postures or eye contact or expressions, when we do not speak anything, still we communicate to the next person, that is non-verbal communication. For example, verbal communication, this what I am doing, it's a live example of verbal communication when I am sharing with you that how communication is helpful or what is communication. I am communicating this thing to you in a speaking language, in a framing language, that is a type of verbal communication. When the sender, the speaker speaks its knowledge, its information, its ideas to the next person. And in non-verbal communication something like when we use any sign, any body postures, any facial expressions, anything like that. For example, if I'm in not a good mood or I'm in not a very good comfort zone, still someone asks me, do you come for coffee? I will say, huh? Or I will say in an anger piece. That is that expression, that facial expressions are non-verbal communication. I am communicating that to the next person that yes, I am not in a good mood and I am not going with you for any coffee or anything else because I am not in a good mood. That is non-verbal communication. Examples for non-verbal communication are also the traffic light, the traffic signals, the posters, TV poster, advertisement posters. All these are the types of non-verbal communication. Like traffic light, if it's red, it is non-verbal communicated to us. It's in our mindset that red means we have to stop to the traffic light and green means that we have to go. It's a type of non-verbal communication where no one speaks, but our mind, our senses already recognize that and start or reacting with that. These are the two types of normal and non-verbal are the two types of communication. Now we are going to discuss barriers of communication. Well, first of all, what is barrier? Barrier is something like hurdle or a jump up with when I am communicating my thing to my next person, to my sender, still there are some barriers, there are some factors due to that communication process is not getting complete, and the communication what information I have to communicate to the next person, I am not able to communicate that, or receiver is not getting that. That is the barrier, that is the meaning of barrier, that is hurdle. What is hurdles of barriers of communication? There are basically broadly three barriers in communication. First is physical barrier, emotional barrier and language barrier. First we will discuss about physical barrier. What are physical barriers? In which the next person, the receiver, is not in the comfort zone, he is not physically comfortable there. First of all is distance. That means the sender and the receiver are in a very distance with that. They can be in other city or they are on upstairs or downstairs. There is a distance between the receiver and the sender, and the sender is not able to speak up that much, उतना तेज नहीं या उतना लाउडली नहीं बोल पा रहे कि जो नेक्स्ट पर्सन है, जो रिसीवर है, उस चीज़ को समझ पाए और अपनी इंफॉर्मेशन उस चीज़ को कैरी अप कर पाए. दैट इज़ द रीज़न. डिस्टेंस की वजह से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा. नेक्स्ट इज कंफर्ट.
when a receiver is not sitting or is not a comfort zone. Like अगर कोई session चल रहा है और there is any guest lecture or something like that, and in that auditorium there is very hot, बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस ऑडिटोरियम में, एंड आई एम इन नॉट अ कंफर्टेबल जोन, तो मैं जो मेरा ऑडियंस, जो मेरे गेस्ट लेक्चर के जो मेरे सर हैं, जो गाइड हैं, वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आई एम नॉट रिसीविंग दैट बिकॉज आई एम नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन. द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन फैक्टर. दैट इज समथिंग लाइक मैं उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रही हूँ, मैं सुनना चाह रही हूँ व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज आई एम गेटिंग थ्रू, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स, लाइक कोई नॉइज़ आ रही हो बहुत ज़्यादा, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, या वहाँ बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो, या बहुत ज़्यादा जो मेरे नेक्स्ट टू पर्सन्स हैं दे आर speaking something or they are making some noises with them, so I'm not able to communicate or I'm not able to receive or listen that information, and that become a barrier for my communication process. Now second one is emotional barriers for communication. In emotional barrier, first of all is state of mind. If I am mentally I'm or not in a stable mind, like I'm reminding something, मेरे से कोई गलती हो गई, मैं वो सोच रही हूँ, मेरा एंगर के मन में है, या मैंने कुछ और गलत कर दिया है, मेरे माइंडसेट में, मेरे माइंड में, मेरे मेमोरी में कुछ और बात चल रही है, देन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिसीवर वांट्स टू से. नेक्स्ट वन इज अपसेट. अगर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट एंड एंगर, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, आई एम नॉट इन गुड मूड, और मैं बहुत ज़्यादा एंगर में हूँ, मुझे किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, तो मैं अपने सेंडर की, अपने इन्फॉर्मेशन देने वाले पर्सन की उस बात को सुन नहीं पाऊँगी, उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. And the last one is language barrier. In language barrier, first is jargon. Jargon that means difficult words. अगर मैं मेरी बात कम्युनिकेट कर रही हूँ और जो मेरा स्पीकर है, जो नेक्स्ट पर्सन है, ही इज़ यूजिंग अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही जार्डन्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और माई वोकैबुलरी इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एंड इट बिकम अ बैरियर फॉर मी. लैंग्वेज बैरियर एंड स्पीकिंग लैंग्वेज, स्पीकिंग दैट मीन्स लैंग्वेज, मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, और आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी और जापानीज, एंड द नेक्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग इन जापानीज, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. एंड द स्पीकिंग स्किल्स, दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्पीकिंग स्किल्स दैट मीन्स जो पर्सन है वो कम्युनिकेट करने की बात को इतना इम्पैक्टफुली, इतना लाउडली और इतना अच्छा प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा कि मैं उसके इमोशंस को, मैं उसकी बात को उतनी वोल्टेज देखूँ और उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूँ. दीज आर द डिफरेंट बैरियर्स, डिफरेंट हर्डल्स दैट आर नॉट एबल टू complete that process of communication. This is what communication and barriers and types of communication. Thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and comment on my video, and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.